we will discuss redox reaction. What is meant by redox reaction? For that we have to understand what is oxidation first and what is reduction. So what is the classical concept or what is the classical idea of oxidation? So oxidation is a process of addition of oxygen. Process of addition of oxygen or electronegative element to a substance. Yani, if I take an example, Mg plus O2 gives MgO. It is a process. It is a process during which oxygen is added to magnesium. So magnesium is a substance, इसको यहाँ पर oxygen add होता है. So the process is oxidation. ये process oxidation है. If I take Mg plus F2, I will get MgF2. This is magnesium fluoride यहाँ पर. Here, during this process, electronegative fluorine is added to magnesium. So this is also oxidation. So in this process, electronegative element is added to a substance, magnesium. So this process is oxidation. This process oxidation. Number second, हम ऐसे बोल सकते हैं removal of the process of removal of hydrogen or electropositive element from a substance. In the process of removal of hydrogen or electropositive element from a substance is also known as oxidation. Let me quote an example. This CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. Here this is a substance. यहाँ पर इसके कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है. सो यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया. यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है. So we have removed hydrogen from this carbon. So this process is also oxidation. This is also oxidation. So this is removal of hydrogen. इस process में क्या होता है? Remove होता है hydrogen from the substance. Exactly we will write. I will take this example. It is a complex. This potassium. This is FeCN6. ये aqueous है. This is ferrocyanide, potassium ferrocyanide. It is a complex. इसको हम करेंगे treat with H2O2. This is hydrogen peroxide. ये भी aqueous है. Aqueous में पानी में है ये. So we'll get this K3 FeCN6. ये भी aqueous plus यहाँ पर KOH. ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसमें से हो गया रिमूव हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसमें से रिमूव हमने कर दिया. यहाँ पर K4 था, यहाँ पर K3 है. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सो दिस इज also oxidation. So we can now conclude oxidation. We can now conclude that oxidation is a process of addition of oxygen or electronegative element to a substance or removal of hydrogen or electropositive element from a substance. So this is the classical idea of oxidation. Now we will take reduction. What is reduction? Reduction is a process of removal of oxygen. Removal of oxygen or electronegative element. This reduction, removal of oxygen or electronegative element from a substance. For example,
Let me quote an example. I will write here HgO, this mercuric oxide. इसको हम करेंगे heat, I will get Hg plus 1 plus O2. इसको हम twice कर देंगे, this is twice. So this is liquid, this is solid, so this is gas. So अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर mercuric oxide था ये, यहाँ पर ये सिर्फ mercury है, so इसमें से oxygen remove हो गया है. So this, as per the classical idea of the reduction, it is as per the classical idea, it is a reduction process. ये reduction process है. Exactly, FeCl3, this is ferric chloride plus H2, so I will get FeCl2 plus HCl. This is, यहाँ पर अगर हम करेंगे इस प्रोसेस में, यहाँ पर हमने क्लोरीन कर दिया, यहाँ पर FeCl3, यहाँ पर Fe के साथ 3Cl थे, यहाँ पर Fe के साथ सिर्फ 2Cl है, so यहाँ पर हमने Cl कर दिया remove, so Cl is electronegative element, so we have removed electronegative element from the substance in the shape of chlorine, so this is a reduction process, so ये reduction process है. Exactly, addition of hydrogen or electropositive element to a substance is also known as reduction. For example, I'll give an example. This is CH2 double bond CH2. This is ethene. इसको हम ऐड कर देंगे हाइड्रोजन. I will get this CH3. So यहाँ पर एडिशन हो गया, ये हो गया ईथेन बन गया यहाँ पर. So this process involves addition of hydrogen to alkene in ethene. So this is actually, as per classical idea, this is reduction process. Exactly, HgCl2 plus SnCl2. This is mercuric chloride. This is stannous chloride. Stannous chloride. I will get Hg2Cl2 plus SnCl4. ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगा. सो यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा, यहाँ पर Hg था 1, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब इसको ऐड हो गया. Hg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सो यहाँ पर ऐड हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मर्क्यूरी हो गया यहाँ पर ऐड. मगर यहाँ पर देखा गया है कि सो इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस एज पर दिस कंसेप्ट, एज पर क्लासिक कंसेप्ट. मगर यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पर होता है, अगर इसको होता है रिडक्शन, यानी इसको ऐड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मगर यहाँ पर इसको होता है स्टेनस को होता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड भी, इसको भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड. सो इसको होता है फिर ऑक्सीडेशन. सो इफ दिस सफर्स रिडक्शन, it undergoes oxidation. ये ऑब्जर्व किया गया है. सो स्टेनस क्लोराइड टू स्टैनिक बनता है, स्टेनस क्लोराइड को बनता है स्टैनिक क्लोराइड, यहाँ पर स्टैनिक क्लोराइड. इसका यहाँ पर फिर कंक्लूड कर दिया गया है कि एक्चुअली बोथ, यहाँ पर these two process ये रियलाइज कर दिया गया है कि यहाँ पर two process occur simultaneously. That means oxidation and reduction. If this undergoes reduction, this undergoes oxidation. So the two processes occur simultaneously. Hence, the word redox was coined. इसलिए word redox coined यहाँ पर coin कर दिया गया है for the simultaneous, when the two process oxidation and reduction occur simultaneously, takes place simultaneously. So this word redox was coined for the class of the reactions. That means simultaneous oxidation and reduction. For that class of reactions, a word redox was coined. So what is now redox reaction? A redox reaction is a reaction of the simultaneous oxidation, which involves simultaneous oxidation and reduction. So where from this redox this word was derived, this was read from reduction,
and ox from oxidation. So इन दो को मिला के ये वर्ड बनाया गया है redox. So now how can we define a redox reaction? So redox reaction is a process, is a reaction which involves simultaneous oxidation and reduction process. So this was the classical concept or classical idea of oxidation and reduction. Simply we can define oxidation. Oxidation will be defined as the addition of oxygen or electronegative element to a substance, or it can be defined removal of hydrogen or electropositive element from a substance. So how can we define reduction? Reduction we may define removal of oxygen or electronegative element from a substance, or addition of hydrogen or electropositive element to a substance. So how can we define redox reaction now? Redox reaction is a process, it is a chemical reaction which involves simultaneous oxidation and reduction process. Okay.